Ladies and gentlemen, I hope we are live. By the way, if you can see us and hear us properly, comment a hi in the comment box so that I know कि आप सुन सकते हो. And so I thought we'll surprise you a little bit. आज दोनों हैं वीडियो में, and we're going to talk about stock market. We're going to answer your questions. We're going to talk about कि in troubles time में how can you make money. If you're having issues, please feel free to ask us. And and if you're watching the recording by the way, तो हो सकता है स्टार्टिंग में हो लायक हो, बट यू कैन कंटिन्यू बात से, बिकॉज क्या पता यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड समबडी एल्स आस्क ऑन योर बिहाफ, राइट? सो आई एम डूइंग द फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पे, Aditya is doing the technical research, उसका लैपटॉप इधर है. And let's start off. So I'm pretty sure कि थोड़ा बहुत questions होंगे about the current market. It's been quite a ride. Market काफी नीचे गया था for quite some time for the past month, and last 3-4 days में it's done really well. So yeah, काफी interesting mode में है market. So we have Ghanshyam saying hello, Pawan saying hello, Arpati saying hi. Then again Ghanshyam saying कैसे हो आप? घनश्याम मैं बढ़िया हूँ bro, हम दोनों बढ़िया हैं. How are you my friend? Right? Ramanand very good. आप कैसे हो? ठीक है, ask us. अभी current market रहते हैं, what is your take on it? क्या लग रहा है? So as of now, if you talk about the overall market, simply by technicals, it is on a downtrend. Overall market, overall trend. So that is why I'll say it is on a downtrend. But the place where Nifty and most stocks reversed, which was 3 days back, that was a very strong support. So breaking that support is also a little hard. So overall, if you Support talk किस about the level पर longer है? one, किस level पे support है? just can you share the chart here? I think I can. So यहाँ पे you can talk about the support में Sensex ले, you want Nifty or Sensex? Let's see Nifty. क्योंकि निफ्टी के बारे में बात करते हैं हमेशा. Okay, फिर Nifty लेते हैं. You can give a technical overview, then I can talk about the fundamental overview. So overall, let's take a daily chart. And if I see right here, so यहाँ पर जहाँ पर I think this is what chart settings are different here. अच्छा, this is, I have adjusted it according to my setting, to be honest. ठीक है. So yeah, so overall, if you see जहाँ पे reversal हुआ था, वो it was a good support. But overall, if you see the trend wise, तो trend wise तो थोड़ा सा downward ही है. That is pretty much clear. So Harsh, you tell me, what do you think about Nifty? क्योंकि बेसिकली जो ट्रेंड में जो बहुत मेजर है ना, लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स, व्हिच इज अ वेरी क्लियर सिग्नल. तो हमेशा बुल मार्केट में हायर बॉटम्स एंड हायर बॉटम्स, बेयर मार्केट इज लोअर पीक्स एंड लोअर पीक्स. और एक और चीज बड़ी कॉमन हो गई, सब बोल रहे हम बेयर मार्केट में एंटर कर गए हैं, बेयर मार्केट में गए हैं. वी आर नॉट इन बेयर मार्केट. टेक्निकली इफ यू गो बाय द डेफिनेशन, बेयर मार्केट होता है व्हेन फ्रॉम द लास्ट पिवट जो आपकी पीक है उससे 20% नीचे आ जाए, दैट इज अ बेयर मार्केट. Correct. Anything below that, it's a correction के अंदर आता है वो, तो you can't say it's a bear market. So still it's a correction only. Why? Because the market is actually, what we feel is कि market price बहुत नीचे आ गई, but in reality the price went really high up. अब जब correction होगी वो भी थोड़ी stronger correction होगी relatively. So that is the only thing, at least for now. If the market does not continue going downwards at a different level only, till then we are still in a correction only. Okay, तो simple trick tech. अच्छा, बाय द वे बड़ी, आई रेड योर कमेंट ऑल्सो, ठीक है, मैं रिप्लाई करना मेरे दिमाग से रह गया कि बैंक का डेट मार्केट कैपिटल से ज्यादा क्यों होता है. अच्छा, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बैंक का रॉ मटेरियल है एज अ बिजनेस, वो डेट है, ठीक है. तो ये कभी मार्केट कैपिटल ज्यादा हो तो बहुत रेयर सिचुएशन होगी, तो एक बार कोई केस है तो मुझे बताओ, अदरवाइज बैंक का डेट हमेशा ज्यादा ही रहता है. करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर इन द बिजनेस ऑफ लोन. इसलिए आप देखोगे in a banking stock we can never take debt to equity ratio, because that does not make sense. मतलब it's like debt is the raw material they have, right? तो वही तो बैंक्स और एनबीएफसीज इन सब की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर ना थोड़ा उल्टा होता है. इट्स नॉट द सेम लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री. बाय द वे, इफ यू वांट तो इसमें वीडियो बना सकते हैं, राइट? ओके, देन लेट्स टॉक मनी इज सेइंग, लेट्स टॉक मनी तो मोनिका हलन की बुक है. लेट्स टॉक मनी इज आस्किंग जोमैटो का क्या होगा सर. For me, I don't have a good view on Zomato, to be very honest. Yeah, क्योंकि Zomato, it's a loss-making company. तो मेरे लिए discussion ही ends there. ठीक है, it's like if you ask me कि investment में do you think it's a good investment opportunity? I feel कि जब profit ही नहीं हो रहा है, so that discussion कि is it a good investment is out of the window, right?
So for me, you know the answer. जब IPO था तभी भी you know the answer. अभी भी my stance is the same on it. सर मैंने LIC IPO ले लिया, क्या करें? LIC IPO. What do you recommend, Aditya? LIC. So let's see what is happening. Can we share the screen of LIC IPO? I'll do that, but Let's नीचे see क्या है the सबको chart. पता ही है. Just a second. It is truly sad. मतलब It is bad. bad, I think, is a In fact, because market last 4 days mein has done really well, but unfortunately we can't see it in LIC IPO, which again states ki there is some kind of inherent weakness in this stock. So यार inherent weakness की बात है. Fundamentally this stock is not strong, man. मतलब इसमें तो there was a very major argument, और ये मैंने वीडियो जो निकाली थी LIC पे कि don't invest, ठीक है, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. मैं तो clearly black and white, generally I don't say so black and white things, but इसमें clear I was very certain on this. अब लोग बोल रहे हैं कि सर 6 लाख करोड़ का आईपीओ है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 10 टाइम्स टेक ओवर होगा. यार जब कोई कंपनी आईपीओ निकालती है ना, वो मार्केट को स्टडी करके निकालती है. सो यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस फैक्ट बाय सेइंग कि कम ऑन इतना बड़ा आईपीओ तो जस्टिफाई वो नहीं हो पाएगा. द कंपनी इज लायबल टू द इन्वेस्टर्स, राइट? एंड इट्स नॉट. अभी तो आई वुड से कि एलआईसी इतना नीचे गिर गया है तो सेंटिमेंट बहुत खराब हो गया इसके अराउंड. करेक्ट. ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी आई डोंट रिकमेंड दिस स्टॉक एट ऑल. मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, इनका जो एजेंट बेस्ड सिस्टम है टू कन्वर्ट इट टू एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ जो पूरा ऑनलाइन है, उसमें आपको मतलब जस्ट थिंक फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो बड़े बड़े सब छोड़ते हैं, इनका पूरा एजेंट का सबसे बड़ा नेटवर्क है. उस नेटवर्क को पूरा हटाना, जीरो करना एंड देन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कितने लोग एलआईसी से पैसे कमा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो हाँ, एलआईसी शायद अभी बिक सकता है टायर बी और टायर सिटीज में ट्रस्ट के नाम पे, बट एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हैं ना, आई कैन अश्योर यू, जो भी आप देख रहे हो, यू विल नॉट ओनली बाय एलआईसी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. आप लॉजिकली कंपेयर करोगे क्या बेटर है, और एलआईसी हमेशा महंगा ही होता है बिकॉज ऑफ द एजेंट्स कॉस्ट. एंड आल्सो एट द सेम टाइम LIC ना उनके ऐसे एक नॉर्मल, इफ यू टेक अ बिजनेस लेट्स से मे बी ICICI और HDFC Life, so their main aim is to generate profits for the investors. But LIC का सिर्फ वो aim नहीं है क्योंकि it's a government company. It also has different aims, let's say 100%. welfare of everyone and all. You're right. और एक तो ये तो चलते पॉइंट सही है, एक पॉइंट ये भी है जहां पे सरकार को प्रॉब्लम है एलआईसी से पैसे करवा देगी. यस बैंक में एलआईसी से पैसे दिलवा दिया, कहीं भी कुछ हो गया एलआईसी से पैसे दिलवा दिया. सो इट्स लाइक अ कैश काउ फॉर द गवर्नमेंट, जो जिससे मुझे काफी सीवियर प्रॉब्लम है. बट शायद ये कम हो सकता है आफ्टर इट बीइंग लिस्टेड. नो, वो कम होगा, बट स्टिल रिलेटिवली इफ यू कैन इमेजिन कि अगर आपने यू पुट इन योर हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट इन वन प्लेस एंड वो सिर्फ नॉट सिर्फ बट कई जगह इट्स नॉट बीइंग पुट इन द राइट वे, तो यू डू फील बैड दैट. राइट. तो ये गाइस डोंट स्पैम. ठीक है, स्पैम करोगे मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ूंगा. तो एक है टैनेला सॉल्यूशंस, टैनेला प्लेटफॉर्म, ये अच्छा है स्टॉक. ये मैंने आई थिंक स्टॉक में किसी लिस्ट में भी आया था, टॉप 100 या नहीं, टॉप स्टॉक्स बेस्ट अंडर 100 या टॉप मिड कैप कहीं आया था ये. दिस स्टॉक I remember इज studying एक्चुअली रियली नाइस. आई मीन आई रिमेंबर ये लास्ट ईयर इट डिड रियली वेल इन 2021. तो 2021 में इट वाज, अरे जो हमारे स्टॉक अवार्ड्स की वीडियो थी ना, इट वाज देयर. हाँ, यस 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 यस. So it was there. So it did really well. अभी तो as I can see in the chart itself, it's been coming down, but still it's relatively much stronger than most stocks out there. यार एक और है गोकुल एग्रो. दिस इज सुकृत. काफी टाइम से सुकृत पूछ रहे हैं. सुकृत, जस्ट अ सेकंड. आदित्य एक बार मैं फंडामेंटल रिपोर्ट खोल रहा हूँ, तो वो खोल दे प्लीज. ओके, गोकुल एग्रो. तो यार अगर सबसे पहले अगर मैं सिंपली देख रहा हूँ तो इनकी बोरोइंग तो अनकंफर्टेबली थोड़ी हाई है. ठीक है, एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन, फिर सब देख सकते हैं. रुको गाइस, मैं गोकुल एग्रो का कर रहा हूँ. वैसे बताओ ये बहुत अच्छा है, नो एज अ फैक्ट कि यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं. बाय द वे, आई चेक दिस ऑन screener.in. इसके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, टिकर टिप भी अच्छी है, ट्रेंड लाइन भी अच्छी है. आई प्रेफर स्क्रीनर, सो आई गो फॉर दिस. ठीक है, सो सिंपली अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है इसका. हाँ भाई, मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो इट्स डूइंग रियली वेल. Yeah. It's on a strong uptrend even though the overall the market is going downwards. ट्रेंड So इज that एक्चुअली वेरी technically तो it's very strong. ठीक है. अब इनका यार लुक, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1 या 2% है. 1%. 1%. So there is some serious issues then. रुक जाएगी. There has to be something else. एडिबल ऑयल्स एंड मील्स ऑफ वेरियस काइंड्स. यार इतना तो नहीं होना चाहिए. 1-2% तो ये तो बहुत रिडिकुलसली है. अब गाइस, अब सी है कि अब 1-2% इज इट द थिंग. इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनका कंपटीशन चेक करूंगा. ठीक है, एग्रोटेक फूड्स पीयर्स में आ रहा है,
इसका ओपीएम देखते हैं, इनका ओपीएम कितना है, 4, 8, 7, 8, तो इस इंडस्ट्री में ही कम है, Exactly. बट दिस इज टू लेस फॉर श्योर, ठीक है, 1-2% तो ऑपरेटिंग का वो मार्जिन ही बहुत कम होगा, एंड इनका देन इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। नाउ जस्ट सी दिस, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 156, इनका इंटरेस्ट, और मैं मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ, इज 56, इट्स 1/3, 33% डेट है, which is not a good sign. मतलब I to prefer debt equity should be 0.5 or less. मतलब इंटरेस्ट ही वो 30% पे कर रहा है ऑन द प्रॉफिट, सो दैट इज अ लिटिल नॉट अ वेरी गुड साइन, राइट। और कैश फ्लो का आपको बताता हूँ, थंब रूल सिंपल क्या है, ऑपरेटिंग शुड बी इन प्लस, ठीक है, इन्वेस्टिंग शुड बी इन माइनस, फाइनेंसिंग शुड बी इन माइनस, दिस इज द थंब रूल, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्लस है, ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इन्वेस्टिंग माइनस है, यस, -46, ये बहुत अच्छा साइन है, दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। अभी सी फाइनेंसिंग +64, इसका मतलब ये इन्होंने बहुत हैवी लोन लिया है, इसलिए इन्वेस्ट किया है, इसलिए इनका डेट भी बहुत हाई दिखा रहा है, राइट। सो कैश फ्लो इट्स ओके, ऐसा कुछ खास नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, promoter holding बढ़ गए, which is a good sign. It's a good sign. Yeah, I would say it's not a bad stock. Again, ये थोड़ा रिस्की में ज़्यादा जोन में आएगा, but technically इसका support काफी अच्छा है, and it's doing well, man. मतलब अच्छा है। टेक्निकली तो इट्स गुड एंड फंडामेंटल्स में तो आई फील हाँ फंडामेंटल में मतलब यस, हाँ, एक दो आई कैन मेक कंप्लेंट्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कम है, और फिर Interest. इनका डेट इक्विटी बहुत कम है, बट अगर इन पॉइंट इतनी इंटीग्रिटीज में ना जाऊं तो यस इट कैन बी गुड स्टॉक, बट वुड आई बाय इट पर्सनली, आई वुड नॉट बाय इट, बिकॉज ये मेरे फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता, और इट्स लाइक मेरे फंडामेंटल स्टैंड हमारे एक लक्ष्मण रेखा है, उसके बाहर जाओ तो रावण उठा के ले जाएगा, तो मैं लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करता, ठीक है। सर आई लव योर वीडियो, थैंक यू सो मच, so nice of you, thank you so much, heart right back at you my friend, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, ठीक है। एंड सेल्विया, दिस इज सेल्विया, व्हाट अबाउट प्राज इंडस्ट्रीज? प्राज इंडस्ट्रीज तो इट्स एथनॉल में यार, वो पूरा वो है, क्या कहते हैं, इट्स अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, सो इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। मेरी एक वीडियो थी टॉप 5 मोनोपोलीज, यू शुड चेक इट आउट। आदित्य, कैन वी हैव द टेक्निकल व्यू ऑन दैट? तो प्राज इंडस्ट्रीज अगर मैं देखूं तो इट्स इन रेंज, तो स्टैग में आ रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा सा इट्स अ लिटिल range form basically in short, so that is supposed to be there, so the range is between 310 and about 400 rupees, so this is where the price would stick, but once it breaks it off, so that's great, so if it's fundamentally good, so Yeah. it's worth investing in. फंडामेंटली इट्स डिसेंट, मतलब हाँ मोनोपोली है यार, अब हाँ आई वुडंट से Exactly. मोनोपोलीज में बहुत स्ट्रांग है, बट इट्स गुड यार। This is Daniela Brito is asking your take on FII data. FIIs for institutional investors. If you don't know, April 2022, do you know this fact? $17 billion का सेल हुआ है in equity Wow. by FIIs. One day नहीं, month. or पूरा April month, 20, एक दिन में तो पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा, बट या, और बताओ इसका, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस ओनली, कि कैसे हमारे रिटेल बायर्स इतने बढ़ गए हैं थ्रू, और मैं रिटेल बायर्स कहता हूँ थ्रू डीआईएस, व्हिच आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउसेस, एएमसीज बहुत बढ़ गए हैं, एंड हमारे मार्केट्स इतना तभी भी नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए था, बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग आउट। सो फॉर मी ओवरऑल इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड पिक्चर कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स घुस रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीट साइन की ऑफ अ मेल्टडाउन, सो मतलब दिस इज अ कंसर्निंग साइन फॉर श्योर, राइट। सो पूछ आदित्य, do you think trading is the only option? I mean, from the question itself, I feel not the only option, definitely. Matlab, you can invest also, you can trade also. Those are both are very different. लगता दूर से very similar है, putting money in stocks, but the way they actually are and the perspective you have to have for your investment portfolio and your trading portfolio is very different. I mean, they're actually जमीन आसमान का फर्क है. कई चीजों में they are against also most of the concepts जो होते हैं. So that is there. But अगर आप trading कर रहे हो, you can make it very systematic. And investing कर रहे हो, तो it should be very logical. I feel ये दोनों words, if you're there, तो I think you'll be sorted. 100%. अच्छा, नाउ यार एक मन्नापुरम फाइनेंस का बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट टू डू विद मन्नापुरम फाइनेंस, कैन यू गिव अ टेक्निकल ओवरव्यू? ठीक है. टेक्निकली तो बैंड बची हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मन्नापुरम फाइनेंस की इट्स बीन कमिंग डाउन, फंडामेंटली इट्स स्टिल नॉट दैट बैड, राइट। फंडामेंटली आप देखोगे 8000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है जो मैं अभी देख रहा हूँ, दिस इज 8087 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, करंट प्राइस 95 है, बट आई विल नॉट बाय दिस। इफ यू आर एक्चुअली बाइंग स्टॉक्स अंडर 100 रुपीज, आई वुड सजेस्ट कि यार यू शुड गो फॉर स्टॉक्स। मैंने वीडियो नहीं थी बेस्ट स्टॉक्स अंडर 100, मैंने सब फंडामेंटल स्टैंडर्ड था, मनापुरम स्ट्रॉन्ग है, बट
इसका टेक्निकल ओवरव्यू इज क्वाइट बैड. और पता नहीं, पर्सनली एनबीएफसीज में मैं थोड़ा सा भी पेसिमिस्टिक हूँ, बिकॉज व्हेन मार्केट्स फॉल, नो, व्हेन इकोनॉमीज कम डाउन, तो सबसे पहले पिटता कौन है? बैंक्स एंड एनबीएफसीज. भाई एनपीएस हो जाते हैं, लोन नहीं मिलते. और जब इकोनॉमी भागती है, सबसे ज्यादा चढ़ता कौन है? बैंक्स और एनबीएफसीज. सो आई फील, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, हम दूसरे स्पेक्ट्रम के एंड में हैं. सो दैट्स व्हाई. एंड टेक्निकली काफी खराब हालत में. व्हाट्स योर टेक? And at the same time, NBFC is even worse than banks. You NBFC, of course, they're high risk, high reward companies. या So अगर मैं technicals देखूं, so I mean technically it's on uptrend, but the way it's coming down from 222 सारा सपोर्ट तोड़ दिया to यार. 95, so it seems like pretty इट्स bad. ब्रोकन ऑल सपोर्ट. Right. अगर if I see a very long term chart, तब it's still on the uptrend, but वैसे overall तो it's pretty bad that. So again, from the perspective of trading, I don't think Manappuram is the best way to go, and investing be probably not. Yeah. So, by the way, you can ask us non-stock market questions also. Okay, that also works for us. Okay, what book are you reading right now? What book are you reading right now? So the book I am reading right now, in fact, यहाँ पर है क्या हूँ? That is मल्टीपैगर वाली नहीं पढ़ा था? not here. There's this book by by the name of Multibaggers. So I think यहाँ पर है कि नहीं? नहीं नहीं. This is there. So I was just going through this book. I haven't really gone through it properly, but overall I just thought, so let's have a look at it. Yeah, And this is a book which has been there for quite a while in our library, right? This certain Quite a book. while. This is actually very nice. Yeah, मतलब थोड़ा सा I would say इसके फंडे you can't apply them on Indian markets, but it's not bad. Right. ठीक है? मेरी नई book, guys, The Subtle Art of Not Giving a Beep, right? And check this out. ये book मैंने, ये आई मेरी कब है? 29 को, 2 दिन पहले आई है. Can you see the date? Can they see the date on this? Can you? I don't know if they can see the date. मैं हमेशा books में हम date लिखते हैं. So yeah, 29/5 2022. Because a lot of times what I've realized कि as investors ना शायद you really need to work, क्योंकि मैं बहुत बार I sometimes panic and freak out कि you know क्या हो रहा है, investment का क्या नहीं हो रहा है, markets का क्या हो रहा है. So somebody recommended that you should read this book, and if you've read this book, comment में बताओ how is it, but don't give any spoilers. ठीक है? मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहली book बताया था. So yeah, I'm quite interested to read this one. Questions. Aditya sir, I DM'd you on Instagram, you don't reply. Reply नहीं करो तो? याद होगा मैंने probably. एक But बच्चा. but Instagram is still, I'm not very active on Instagram, and on my personal profile at least. So yeah, I'll have a look at it. Then EIX is a very strong stock. तो उसमें कुछ IEX, sorry, उसमें डाउट भी नहीं है. It's a very strong stock. View on Vodafone Idea. Shaurya, my view is that you should sell that company. It's a bad company. It's fundamentally bad. I'm not even going to waste my time researching it. I'm sorry if you're feeling bad, but it's a fact. So the only reason है कुछ खरीदने का तो बता देना. But it does not make any sense to catch a falling knife and hope it's going to do well one day. I'm sorry for being rude, but that's the reality. ठीक है. सर, व्हाट हैव यू डन विद योर पोर्टफोलियो? यार मैं आपको, आई थिंक मैंने पहले वीडियो में बोला है, 70% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज आउट. आई हैव टेकन इट आउट फ्रॉम द मार्केट्स, एंड दिस वाज 16th or 17th March आई हैड सोल्ड. 2022 आई हैड सोल्ड. एंड या एंड हाँ, ये भी बता दूं कि अब बहुत लोग सोचते हैं कि आई एम लाइक अ गॉड ऑन द इंटरनेट और भगवान बन गया हूँ मैं, मुझे फ्यूचर पता है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है? आई एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन दिस, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, ऑन द मार्केट करेक्शंस. लॉजिक ये कि वी इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट्स क्या है? इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. आपको वहां पैसे डालना है जहां आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की. दैट्स इट. अल्टीमेटली यहाँ पे कोई लॉजिक काम करेगा नहीं. सो फॉर मी, logically speaking, majority of the probability of 90% is that you should sell out. That's why we've sold out. That's the reason. अब इसको टेक्निकल फैक्टर हैं, फंडामेंटल फैक्टर हैं, बिहेवियरल फैक्टर हैं, वो सब एक वीडियो मैंने बनाए थे. थोड़ा मुझे वीडियो का नाम भूल रहा हूँ मैं, सर्च कर लेना, मिल जाएगा. ठीक है. एयरटेल. ओके, अक्षत इज आस्किंग अबाउट एयरटेल. जस्ट लुक एट एयरटेल. एक सेकंड, मैं एयरटेल के फंडामेंटल देख लेता हूं एक बार. जस्ट अ सेकंड अक्षत, जस्ट अ सेकंड. भारती एयरटेल फंडामेंटली तो कम ऑन, यू कांट आर्ग्यू, इट्स ब्रिलियंट. ठीक है.
इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, इनका प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, डेट इनका थोड़ा हाई है बट ठीक है बिकॉज इट्स रेप्यूटेड कंपनी, डेट एक्चुअली काफ़ी हाई है बट ठीक है। एंड ये बात तू फंडामेंटल व्यू देखा, मुझे थोड़ा टेक्निकल व्यू में थोड़ा हाँ, तो टेक्निकल व्यू इट्स प्रीटी क्लियर कि अल्टीमेटली it's doing good only, but it's still in range. So this is also a range bound stock, which is still better. As of now, the सारे downtrend पे stocks जा रहे हैं. If there's one stock in range, so I think it's still better than downtrend. So overall, तो I feel technical से हिसाब से तो it's good. गुड कैसे तो पूरा डाउन जा रहा है? नहीं, but overall, from the range perspective, for the अच्छा, past 2-3 months, so it's on range only. Short term पर तो सभी down है. Short term trend. या फंडामेंटली आई वुड से इसमें डेट बहुत ज़्यादा हाई है फॉर श्योर, राइट? सॉरी तो डेट बहुत ज़्यादा हाई है। सो अब अगेन डिपेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, हाँ एयरटेल इज अ गुड कंपनी, यू कैन डू दैट, बट डेट पर्सनली मेरे लिए डेट बहुत ज़्यादा हाई है, आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन एयरटेल। अदरवाइज तो इट्स एयरटेल, कम ऑन, इसमें कितना तारीफ कर सकते हो यार, इट्स वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन अ कंट्री। ठीक है, सो आदित्य कुछ फाइनल क्वेश्चंस लें फिर फाइनल करें, रैप अप करें। Let's take a final ठीक है, question. अब आखिरी एक दो फाइनल क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर रैप अप करने वाले हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब प्लीज कर देना, इट रियली हेल्प्स अस लॉट। क्योंकि True. अब ना, और बाय द वे कल 1 बजे आप सबके लिए इतना बड़ा सरप्राइज है ना, एंड आई विल टेल यू दिस, अब वी हैव एंटायर टीम ऑफ एंकर्स। तो मैं आदित्य तो वीडियो देते रहेंगे, वो जो हम दे रहे हैं, राइट? वी गिव 3 टाइम्स अ वीक, एक पॉडकास्ट जाता है, वो तो होता रहेगा, बट अब हमारे एंकर्स आ रहे हैं। दोज एंकर्स विल give you one video every single day at 1 p.m. sharp. So you can mark it in your calendars. कल पहला दिन है, so हो सकता है जो नए एंकर्स आएंगे, they might not be so confident in front of the camera, थोड़ा सा it takes time, so be kind to them, give them beautiful comments, give them a lot of views, उनको मोटिवेट करना। ये क्यों कर रहे हैं हम? to make sure कि यार आप एक भी स्टॉक मार्केट न्यूज मिस ना कर दो, कुछ भी मिस ना कर दो। देयर सो मेनी पॉइंट्स आई वांट टू कवर, बट द थिंग इज कि मैं हमारे पे इतनी बैंडविड्थ नहीं कि मैं इतनी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूं, राइट? सो वो आ रहे हैं, गिव देम लव, बिकॉज अभी जो गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस का यूट्यूब पेज है ना, इफ यू आर अ ओल्ड सब्सक्राइबर, दोस्त आप इतना प्राउड होने वाले हैं ना कमिंग मंथ्स, आई कांट इवन टेल यू, इतने मैसिव प्लान्स हैं, भेजे खुल जाएंगे। वी आर जस्ट हियर टू डिस्टर्ब द एंटायर यूट्यूब फाइनेंस थिंग, बेस्ट, टू बी द बेस्ट, and I know you've supported us for us, it's a long time, so thank you so much for that, and give them a lot of love, ठीक है? उनको एंकर्स को बहुत सारा प्यार और कॉन्फिडेंस और बूस्ट देना, बिकॉज स्टार्टिंग में तो दे विल नीड इट। हाँ, तो anyways, we're super excited for tomorrow. चलो, perfect then. I think that is ओके, लास्ट क्वेश्चंस अब छोड़ दिए, लास्ट को कमेंट कर देना, विल ट्राई एंड आंसर देम, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, एंड दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली empowering.